तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। At the lotus feet of Sri Radharas Bihari, by the blessing of Srila Prabhupada, we are continuing our Bhakti Vaibhava study of 3rd Canto, 12th chapter, the creation by Brahma of the Kumaras and other creation. We are in the next section, which is the creation from the body and the mind of the Brahma. This goes from the verse number 21 to 27. And these are the different rishis which are born from different parts of the body and mind of the Brahma. So Narad is born from deliberating the best part of his body, actually heart. The Vashisht from breathing, the Daksh from thumb. Daksh thumb से हुआ सबको thumb दिखा रहा है अभी तक। हाँ, शंकर जी को भी thumb दिखा दिया। इसका गड़बड़ है, thumb से ठीक नहीं। Bhrigu from touch, Kartu from hand, Pulastya from ear, Angira from mouth, and Atri from eyes, Marichi from mind, and Pulha from navel of the Brahma. ये तो है 10 ऋषि। कितने? 10 है ना? 10 है ना? 10 rishis from different parts of the Brahma. Now then Brahma, he created dharma and adharma. Religion, dharma, right breast where Paramatma is situated. ये तो बात समझ में नहीं आई। अब right breast में परमात्मा है कि लेफ्ट में? हमारी हार्ट लेफ्ट में है, परमात्मा कहाँ है? बात समझ में नहीं आई। नहीं, क्या लिखा है गलत है क्या? देखेंगे। ठीक है। And religion adharma back where the jiva's death takes from the back of the Brahma. Then factors which instigate adharma. अधर्म कैसे होता है? ये वर्स नंबर 26 और 27 में है। The lust and desire arise from heart, anger between eyebrows, greed lips, power of speaking vak mouth, and ocean penis, low abdominal activities, and a source of sin. And the kardam was born from shadow or splendor of Brahma. So this is the section which we will do now. Atha abhidhyayatah sargam dashputraha prajajangne Bhagavad Shakti Yuktasya Loka Sanatana Hetavaha
was empowered by Supreme Personality of Godhead, thought of generating living entities, begot 10 sons for the extension of generation. Next. Marichir Atriyang Irasao Pulastyaha Pulaha Karto Bravo Vasishto Dakshascha Dasmas Tatra Naradaha Marichi Atri Angira Pulah Kartu Bhragu Vashish Daksha and the 10th son Narad were thus born. Srila Prabhupada writes, the whole process of creation, maintenance and dissolution of the cosmic manifestation is meant to give the conditioned soul a chance to go back home, back to Godhead. Brahma created Rudra to help him in the creative endeavor. But from the very beginning, Rudra began to devour the whole creation. And thus he has to be stopped from such devastating activities. Brahma therefore created another set of good children who were mostly in favor of worldly, fruitive activities. He knew very well, however, that without devotional service to the Lord, there is hardly any benefit for the conditioned soul. And therefore, he at the last created his worthy son Narad, who is the supreme spiritual master of all transcendentalists. Without devotional service to Lord, one cannot make progress in any department of the activity. Although the path of devotional service is always independent of anything material, only the transcendental loving service of the Lord can deliver the real good of life. And thus, the service rendered by the Sriman Narad is the highest among all the sons of Brahma. So rest of the 9 sons, they are more like a progenitor. They are the Prajapati. They married and they have children. Vasishtha has 100 children killed by Vishwamitra. So they all have, only Narad is one who is celibate and distributing devotional service. Chakravarti writes, this verse describes how Marichi and other appeared as representative of Karma Yoga, which means having the family and increasing the progeny. Appear as representative of Karma, Yoga, Jnana, Vairagya, Tapa. Yoga and Karma only become successful by performance of Bhakti. And Bhakti, on the other hand, does not depend on these processes. It gives all results. It is the very form of all the results. Thus, Bhakti is represented at the end and appeared in the form of Narad. So, next verse. Uta Sangha Nardo Jagne Daksha Angushtat Swayam Bhava Pranad Vasishtaha Sanjato Bhragu Tvachi Karta Karto. The Narad was born from the deliberation of Brahma, which is the best part of his body. Vasishtha was born from his breathing, Daksh from thumb, Bhrigu from the touch, and Kartu from hand. So which is the deliberation? From Brahma's lap. हृदय से, इसको हृदय से, ब्रह्मा की उत्पत्ति ब्रह्मा के हृदय से नारद. From the lap. Lap का मतलब वक्षस्थल basically. Srila Prabhupada writes, Narad was born from the best deliberation of Brahma, because Narad was able to deliver the Supreme Lord to anyone he liked. The Supreme Personality of Godhead cannot be realized by any amount of Vedic knowledge or by any number of penances. But a pure devotee of Lord like Narad can deliver the Lord to his good will, by his good will. The very name Narad suggests that he can deliver the Supreme Lord. Nara means the Supreme Lord, and Da means one who can deliver. Narada. Nar, Bhagavan, Da, Dene Wala. That he can deliver the Supreme Lord does not mean that the Lord is like commodity that can be delivered to any person, but Narad can deliver to anyone the transcendental loving service of the Lord as the servitor friend.
parent and lover, as one may desire out of one's own transcendental love for the Lord. In other words, it is Narad only who can deliver the path of Bhakti Yoga, the highest mystic means for the attainment of Supreme Lord. नारद कौन सी भक्ति का आचार्य है? वैदिक साधन भक्ति के वैदिक साधन भाव और वैदिक साधन प्रेम का आचार्य है, रागनोगा का नहीं। नारद वैदिक साधन प्रेम का एग्जाम्पल है। सो अभी भी रागनोगा साधन के लिए रूप गोस्वामी के अनुगामी बनना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज द पैथ ऑफ रागनोगा। नारद साधन भक्ति वो वैदिक साधन प्रेम का प्रतीक है। उत्संगात मीन्स फ्रॉम द लैप, द प्लेस ऑफ अफेक्शन, हृदय प्रेम जहां होता है वहां से। Another meaning is from the association with great devotees. It is said, Apo Nar iti proktaha. Nar means water, the offspring of the Lord. Thus, it is understood that Nar referred to the Supreme Lord. Nar means that which belongs to the Lord, and Nard means that which gives dasya, sakya, and other relationship with Lord. इनको प्रभुपाद ने लिखा है servitude, friend, and everything. The other word Nard means Bhakti Yoga, which produce such relationship. 24. Pulaho nabhito jagne pulastyaha karanayo rishi angira mukhato kshanot atri marichir manaso bhava. Pulas was generated from the ear, Angira from mouth, Atri from eyes, Marichi from mind, and Pula from the navel of the Brahma. Next. Dharamastanada dakshenato yatra narayana swayam adharmaha prashto yasma मृत्यु लोक अभयंकरः। धर्म स्तनाद दक्षिणो, दक्षिण मतलब राइट, स्तनाद मीन्स चेस्ट। धर्म राइट साइड ऑफ चेस्ट से निकला ब्रह्मा जी के, वहां यत्र नारायण स्वयं, जहां भगवान नारायण रहते हैं। अभी हमारा कंसेप्ट गलत हो गया क्या? हम कहते हैं भगवान लेफ्ट साइड में रहता है। लेफ्ट में रहता है कि राइट में रहता है? हमारा दिल लेफ्ट में है, वो मटेरियल दिल है, उसमें भगवान नहीं रहता, उसमें कौन रहता है? हाँ, राइट साइड लिखा है। हाँ, बीच में कर दो तो काम चलेगा, इधर उधर लिखा राइट है। दक्षिणों कहते हैं राइट को, वाम कहते हैं लेफ्ट को। दक्षिण एंड वाम कहते हैं संस्कृत में। दक्षिण मीन्स राइट, वाम मीन्स लेफ्ट। सो religion was manifested from the breast of the Brahma, wherein is seated the Supreme Personality of Godhead, Narayan. And religion appeared from his back, where horrible death takes place for the living entities. प्रभुपाद ने चेस्ट लिख दिया, आपकी मर्जी, इधर उधर ढूंढते। अब चक्रवर्ती पाद रहे, religion appeared from the right breast of Brahma. दक्ष क्या है? दक्षिण स्तनाद, स्तनाद मतलब ब्रेस्ट, राइट ब्रेस्ट से निकला। अब सोचते रहना। The religion was manifested from the place where the personality of God is personally situated and every significant, in a very significant, because religion means devotion service to the personality of Godhead, as confirmed in Bhagavad Gita as well as in Bhagavatam. In Bhagavad Gita, the last instruction to give all other sarva dharman parityaja. Bhagavatam also confirm highest perfection of religion is that one lead to devotional service of the Lord, unmotivated, uninterrupted. कौन सा श्लोक है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति। The heart is the most important part of the body. अभी हार्ट हमारा फिजिकल दिमाग में है कि जो ये हार्ट पल्पेट करती है, इसको हम हार्ट मानते हैं। अब ये सच क्या मानना है, बड़ी समस्या है। हार्ट
ओके, कहाँ गया, कहाँ रह गया? द हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, whereas back is the most neglected part. When one is attracted by an enemy, one is apt to endure attack from the back and protect himself carefully from the attack on the chest. All type of religions spring from the back of the Brahma, whereas real religion, the devotional service of Lord, is generated from the chest, the seat of Narayan. Anything which does not lead to the devotional service of the Lord is religion, and anything which leads to the devotional service of the Lord is religion. Supreme dharma appears from the action prescribed in Bhakti Yoga and Karma Yoga. Thus, this verse describes the appearance of dharma. The heart or breast is considered the best place, since it is the location of affection. Adharma refers to non-performance of prescribed dharma and is the performance of forbidden acts. Adharma appeared from Brahma's back, which is not attractive and is not place for affection. अब राइट में भगवान है, ये कंफ्यूजन में डाल दिया, इसलिए बहुत आसान है फ्रॉम चेस्ट, लेकिन दक्षिण लिखा है, दक्षिण स्तन लिखा है, और दक्षिण का मतलब राइट होता है. ये तो आचार्य लिख रहे हैं, श्री नारायण गॉट मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ थ्रू धर्म, which in turn got originated from the right chest of our Lord. सीधा राइट चेस्ट है जी. हाँ जी, अच्छा, सामने वाला देखे तो राइट. ओके, आपके लिए राइट है. अच्छा, ये भी एक एंगल है, सामने वाले के लिए राइट है, वो मिरर में देखे तो राइट है. हृदय कामो भ्रवो क्रोधो लोभश्च अद्रः तच्छदात् हास्याद्वाक् सन्धवो मेधरा निरतिः पायो अगाश्रियः. Lust and desire become manifested from the heart of Brahma. Anger from, अब देखो जहाँ से डिजायर निकलेगी, लस्ट निकलेगी, वहाँ से तो नहीं निकलेगा ना धर्म, ये अधर्म की जगह है ना. तो हार्ट जनरली, हमारे दिमाग में जो हार्ट है वो स्पिरिचुअल हार्ट नहीं है, वो थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है. माइंड को भी हार्ट कहते हैं, अंतःकरण को भी हार्ट कहते हैं, कभी जनरली क्या माइंड को हार्ट कहते हैं, तो इसका मतलब अंतःकरण. और यहाँ एंगर फ्रॉम बिटवीन द आईब्रोज, ग्रीड फ्रॉम बिटवीन द लिप्स, एंड पावर ऑफ स्पीकिंग फ्रॉम माउथ, एंड द ओशन फ्रॉम द पेनस, एंड लो एंड abominable activities from his anus, and source of the all sins, shelter of all sins. Conditioned soul under the influence of mental speculation, however great one may be in estimation of mundane education and learning, he cannot be free from the influence of psychic activities. Therefore, it is very difficult to give up lust and desires for low activities until one is in the line of devotional service of the Lord. When one is frustrated in the lust and low desires, anger is generated from the mind and expressed from between the eyebrows. प्रभुपाद जी उन सबको लाइन में ले रहा है. Ordinary men are therefore advised to concentrate the mind by focusing on the place between the eyebrows, whereas the devotees of Lord are already practiced to place the Supreme Personality Godhead on the seat of their mind. ज्ञानी कहते हैं दोनों आईब्रो के बीच में कंसंट्रेट करो तो क्रोध नहीं आए. भक्तों को उसको करने की जरूरत नहीं है, वो अपना मन भगवान के ऊपर केंद्रित करते हैं. ओके,
the theory of becoming desireless is untenable because the mind cannot be made desireless. When it is recommended that one be desireless, it is understood that one should not desire things which are destructive to spiritual values. A devotee of the Lord always has the Lord in his mind. अब mind में आ गया heart से. And thus he does not need to be desireless because all his desires are in relationship with the service of the Lord. The power of speaking is called Saraswati, or goddess of learning, and the birthplace of the goddess of learning is the mouth of Brahma. Even if a man is endowed with the favor of goddess of learning, it is quite possible for his heart to be full of lust and material desire, and his eyebrows to display symptom of anger. One may be very learned in mundane estimation, but that does not mean that he is free from all low activities of lust and anger. Good qualification can be expected only from the pure devotee who is always engaged in the thought of Lord or in samadhi with faith. So ये बार बार प्रभुपाद लिख रहे हैं लस्ट एंड एंगर. तो ये कहाँ लस्ट एंड एंगर कहाँ है? कामेश क्रोधेश. उसके परपट में प्रभुपाद ने क्या लिखा है? भगवत गीता की इसका परपट किसी को याद है? Love of God, it is natural. That is perverted in the lust and the material world. Therefore, if we awaken the love of God, then we will be free from the lust and anger. The lust is a perverted love of God. ये उस पर में प्रभुपाद का फोकस इस पॉइंट के ऊपर है. So here devotional service means we awaken love of God. That will reform the lust into love of God, because lust is nothing but the perverted love of God. Okay, next. This verse is why the appearance of factors which instigate the. This verse describes the appearance of factors which instigate adharma, such as lust. Hriday means in the mind. Because the independent nature of the mind is impossible to uproot lust situated there. Mind is independent. Though anger and other items also arise from mind, their place of becoming visible, such as eyebrows, are mentioned here. असल में एंगर भी मन से ही उत्पन्न होती है, परंतु वो दिखती आईब्रो में, इसलिए वहां लिखा है. Though human possesses lust and anger, it is possible for them to develop wisdom composed of knowledge of scripture. To show this, the manifestation of the wise word is described. A speech arose from his mouth. Verse 27, last of this section. Chaya kardamo jagne devhutyaha pati prabho manase dehataschedam jagne vishwa krito jagat. The sage Kardan, husband of the Devhuti, was manifested from the shadow of Brahma. Thus all become manifested from either the body or mind of the Brahma. Although one of the three modes of material nature is always prominent, they are never represented, annulled by any one another. Although one of three modes of material nature is always prominent, they are never represented, annulled by one another. इसका मतलब कोई एक वक्त में नहीं होगा, कभी एक कभी कैसे होगा. Even in the most prominent existence of two lower qualities, the mode of passion and ignorance, there is sometimes tinge of the good mode of goodness. Therefore, all these sons generated from body or mind of Brahma were in the mode of passion and ignorance. But some of them, like Kardam, were born in the mode of goodness. Narad was born in the transcendental state of Brahma. So Narad is Nirguna, beyond three modes. Kardam is mode of goodness. Some are other and patient, some are ignorant.
ये दुनिया में ऑलवेज देयर इज कंपटीशन बिटवीन देम, एक आएगा दूसरा जाएगा, चलते रहेंगे. This verse shows that even in a state of tamas and rajas, sometimes some amount of sattva is manifested. Chaya means from Brahma's splendor. Chaya का shadow भी कहते हैं, splendor भी कहते हैं. Now we are going to the Vak episode 28 to 33. We have Vak episode. ब्रह्मा जी का जो है वाचम द्वैत्रम तन्वीम स्वयंभो हरतिम मनः अकामं चकमे क्षतः सकामिति नः श्रुतम्. Whether we have heard that Brahma had a daughter named Vak who was born from his body and who attracted his mind towards sex, although she was not sexually inclined towards him. Srila Prabhupada writes, Balvan Indriya Gramo Vidvan Sapi Karashyati Bhagavata. It said that the sense of the soul are so mad and strong that they can even bewilder even the most sensible and learned man. Therefore, it is advised that one should not indulge in living alone even with one's mother, sister or daughter. Vidvansa api karshati means that even the most learned also become victim of the sensual urge. Maitreya hesitated to state this anomaly on the part of Brahma, who was sexually inclined to his own daughter, but still he mentioned it because sometimes it so happened that the living example of Brahma himself, although he is in the primal living being and the most learned within the whole universe, if Brahma could be victim of sexual urge, then what of the others who are prone to so many mundane frailties? This extraordinary immorality on the part of Brahma was heard to have occurred in some particular kalpa, but it could not have happened in the kalpa in which Brahma heard directly from Lord the 4 essential verses of Srimad Bhagavatam. Because the Lord blessed Brahma after giving him blessing on the Bhagavatam that he would never be bewildered in any kalpa whatsoever. This indicates that before the hearing of Bhagavatam, he might have fallen victim to such sensuality, but after hearing Srimad Bhagavatam directly from the Lord, there was no possibility of such failure. One should, however, take serious note of this incident. A human being is a social animal, and his unrestricted mixing with fair sex leads to downfall. Such social freedom of men and women, especially among the younger section, is certainly a great stumbling block on the path of spiritual progress. Material bondage is due only to this sexual bondage, and therefore unrestricted action of man and woman is surely a great impediment. Maitreya cited this example on the part of Brahma just to bring to our notice this great danger. Chakravarti Pad writes, even those who are very learned and with a great power of discrimination cannot control lust. This verse shows that one should not remain alone with woman. Maitreya says, we have heard. This indicates, though this should not be spoken, in order to give knowledge, I speak without fault finding. Without fault finding. मैं ब्रह्मा में कोई दोष नहीं देख रहा हूं. Since I fear making offense, he had fear that by fault finding he would fall down in the manner of Marichi's sons. ये बात चैतन्य महाप्रभु ने बताई थी एक ब्राह्मण को, जिसने कहा मैं आपको तो भगवान मानता हूं, लेकिन नित्यानंद तो रेशमी कपड़े पहनता है, पान चबाता है, मेरा श्रद्धा नहीं. महाप्रभु ने कहा ब्रह्मा जैसे महात्मा के ऊपर मरीचि के बेटे हंसे थे और असुर बनना पड़ा था, इसलिए महात्माओं के प्रति दोष बुद्धि नहीं रखना चाहिए. ये मरीचि का एग्जाम्पल वो है. ये छठ गर्भा बने बाद में. ये मरीचि के पुत्र देवकी के यहाँ
काल नेमी कंस के बेटे बने, इनको कंस ने मारा। फिर ये कहाँ गए? सूतल लोक में चले गए। और एक दिन श्री कृष्ण गए अपनी माता को बलराम जी के साथ प्रणाम करने। देवकी ने कहा, आपने अपने गुरु का पुत्र तो लाके दिया था, बहुत पुराने जमाने से मरा था, मेरे 6 बच्चे वापस लाके दो। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम सूतल लोक गए, बलि महाराज से पूजित हुए और 6 बच्चे वापस लाए। माँ देवकी ने उनको दूध पिलाया स्नेह से, भगवान का प्रसाद पाके वो मरीचि के बच्चे फिर वापस देवता बने। ये कथा महाप्रभु ने अपने मुख से उस ब्राह्मण को सुनाई थी जो नित्यानंद में दोष निकाल रहा था। तो इसके लिए एक शब्द आएगा आगे जो बंगाली का है, क्रिया मुद्रा विज्ञान, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान, ये आएगा। ठीक है। The phrase also indicate that this incident was not seen by anyone in the present kalpa. Rather, it happened in the previous distant kalpa and is now being explained, since it cannot be accepted to have occurred after Brahma heard the 4 essential verses of Bhagavatam during the first day of Brahma's life. इसका मतलब और किसी समय एतान मतम सनातिष्ठः प्रमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेशु न विमोह्यति करचित। भगवान का आशीर्वाद है। Follow my instruction in detail with extreme concentration. You will not be bewildered at any time during your lifetime and in subdivisions. So ये इंसिडेंट किसी और समय का है। उधर एक स्टेटमेंट है that during the first day of this Brahma's life. This Brahma's life मतलब ये दूसरे ब्रह्मा की बात है। फर्स्ट डे को तो भागवत सुन ली, तो इसका मतलब उससे पहले कभी ब्रह्मा के किसी दिन में हुआ होगा, किसी ब्रह्मा के किसी दिन में। इसका मतलब तो यही है। ये है सिद्धांत अदर थाट में है। सिद्धांत दर्पण टेक्स्ट 7.2 purport. When Lord Krishna blessed Lord Brahma, he meant that in his daily kalpa function in the creation of the universe vikalpeshu. ये एक बात आप देखना जाके, कल्प, विकल्प और महाकल्प, ये 3 वर्ड हैं। कल्प, विकल्प और महाविकल्प, महाकल्प। कल्प तो ब्रह्मा जी का दिन है, विकल्प है गर्भोदक्षाई के द्वारा ब्रह्मा जी का जन्म, और महाकल्प है ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद दोबारा जब सृष्टि होती है। ये दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में ये 47 है। देखो 2:10:47 में है कि कल्प, विकल्प, महाकल्प है। देखो आइडिया है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये अभी मैंने कहीं पढ़ा रहा था, उधर आया था कल्प, विकल्प और महाकल्प। विकल्प क्या है, है क्या? है क्या कल्प विकल्प है? नहीं है? क्या लिखा है? नहीं, उसके नीचे भागवतम 2:10 46 में कह रहा हूं मैं, नहीं है? The different type of creation called महाकल्प, विकल्प एंड कल्प पढ़ा है ना परपट में? हाँ, तो उसको आप अच्छी तरह से पढ़ें, कुछ समझ में आता है? पहले देखिए। In the Mahakalp, the Lord assumed the first Purush incarnation as Karunadakshayi Vishnu. महाकल्प वो है जब कारुणदक्षाई विष्णु सृष्टि का कार्य शुरू करता है। The creative instruments are 11 ingredients, ये तो सब आप पढ़ेंगे, समझ में आएगा। Creation of Brahma and dispersion of the material ingredients are called vikalpa. माने गर्भोदक्षिणा का काम है विकल्प। महाकल्प है कारुणदक्षाई विष्णु का काम, विकल्प है गर्भोदक्षाई विष्णु का काम ब्रह्मा की सृष्टि करना, और कल्प क्या है?
ईच डे ब्रह्मा में जो सृष्टि ब्रह्मा करता है उसको कल्प कहते हैं। तो यहाँ ये विकल्प शब्द आया है, विकल्पेशु, तो ये समझना चाहिए ब्रह्मा की सृष्टि जब होती है। Brahma could not become bewildered by faults such as inequality, etc. He did not mean that Brahma would never be deluded even his Maya. Lord Balaram and Lord Shiva are superior even to Brahma, but both eventually also became bewildered by Lord Krishna. It is not stated that Lord Brahma would never come under illusion at all. This interpretation is also applied to the verse 2:6:34. Nabharti में, otherwise other passages would also be considered as interpolated, such as description in the 12th chapter of the 3rd book about the Lord Brahma being deluded by his daughter Vak, which is meant to remove the conception that he is the Supreme Lord. Vak episode, verse number 29. अभी ब्रह्मा के सन 29 से 31 तक ये ब्रह्मा के जो 10 सन है वो कह रहे, ये नहीं, वो पहले थे। तमाधर्मे कृतमतिम विलोकया पितरम सुताः मरीचि मुख्यः मुन्यो विश्रम्भात प्रत्यो उद्भवेयम्। Thus, finding their father so deluded in an act of immorality, the sages led by Marichi, all son of Brahma, spoke as follows with great respect. The sages like Marichi were not in the wrong in submitting their protest against the acts of their great father. They knew very well that even though their father committed a mistake, there must have been some great purpose behind the show. Otherwise, such a great personality should not have committed such a mistake. It might be called Brahma wanted to warn his subordinate about human fertilities in their dealing with the woman. This is always very dangerous for persons who are on path of self-realization. Therefore, great personalities like Brahma, even when in the wrong, should not be neglected, nor could be the great sages headed by Marichi show any disrespect because of his extraordinary behavior. दोनों बातें. Out of friendship, Vishrambhat, since they were his offspring, they instructed him not because of anger on seeing his sin, or meaning can be having faith, Vishrambha, that even the sin of great persons are not sins. They gave instruction only out of fear of disturbance in the consequent population. ब्रह्मा गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे देख के ऐसे काम ना करें. This indicates the Marichi and other did not commit offense in speaking. दक्ष ने offense किया था, ये offense नहीं किया इन्होंने. Next verse 30. नये तत्पूर्वहि कृतं त्वदये न करिष्यन्ति चापरे यस्त्वं दुहित्रं गच्छेत् अंगृहा अंगजं प्रभो. O Father, this performance in which you are endeavoring to complicate yourself was never attempted by any other Brahman, nor by anyone else, nor by you in previous kalpas, nor will anyone dare to attempt in the future. You are the supreme being in the universe. So how is it that you want to have sex with your daughter and cannot control your desire? The post of Brahma is the supermost post of the universe, and it appears that there are many Brahmas and many universes beside one in which we are situated. One who fill the post must be ideal in behavior, for Brahma sets the example for all living entities. Brahma, the living entity who is most pious and spiritually elevated, is entrusted with a post next that of personality of Godhead. His lust, this has not been done by persons in previous kalpas.
or this has not been done by any Brahma previous to you. Angajam means lust. Verse 31. Tejasamapi hetan na sushlokayan jagat guru yadvirtamanutishtandvai lokakshemaya kalpate. Even though you are the most powerful being, this act does not suit you because your character is followed by spiritual improvement by the people in general. श्रील प्रभुपाद पढ़ पढ़िए. It is said that supremely powerful living entity. Microphone. It is said that a supremely powerful living entity can do anything and everything he likes, and such acts do not affect him in any way. For example, the sun, the most powerful fiery planet in the universe, can evaporate water from anywhere and still remain as powerful. The sun evaporates water from filthy places and it is not affected with the quality of the filth. Similarly, Brahma remains unimpeachable in all conditions, but still, since he is the spiritual master of all living entities, his behavior and characters should be so ideal that people will follow such sublime behavior and derive the highest spiritual benefit. Therefore, he should not have acted as he did. So, like sun is not contaminated when evaporate the urine from the earth. So similarly, people like Brahma, if they do, they will mistake it, they should never be criticized. एक और शब्द भगवत गीता में आपको पढ़ने के लिए मैं कहूँ, 2 चैप्टर वर्स नंबर 5 देखो, 5 मेरे ख्याल में देखो, 5 है कि 6 है, देखो निकालो जरा. भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर वर्ष नंबर 5 को पढ़िए. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्योमोक्तुं भैक्षमपि अलोके हत्वार्थ कामांस्तु जुनोन् यैव भुञ्जीव भोगान् बुद्धि. इसमें पहली लाइन में ही के साथ महाअनुभाव को जोड़ के देखो क्या बनता है. ही के साथ एम जोड़ो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा ना, हिम होगा ना. हिम का मतलब बर्फ. बर्फ को पिघलाता कौन है? सूर्य. तो सूर्य को जैसे कोई दोष नहीं लगता है, ऐसे भीष्म जैसे अगर दुर्योधन का नमक भी खाएं फिर भी इनको दोष नहीं लग सकता है. इसको हेम को हीम महाभाव करके चक्रवर्ती पाद ने इसका एनालिसिस किया हुआ है. ही महानुभाव, हिम बर्फ को पिघलाने वाला मतलब सूर्य. जैसे सूर्य को कोई दोष नहीं लगता, ऐसे भीष्म या द्रोण जैसे गुरुओं को चाहे वो दुर्योधन के पक्ष में हो फिर भी दोष नहीं लगता. अगर दोष लगा होता तो भगवान थोड़ी जाता अंत समय दर्शन देने के लिए. तो ये महानुभाव की एक परिभाषा. ही को महा के साथ मिलाया तो हिम हो गया, हिम का मर्द बर्फ हो गया, और उसको पिघलाने वाला सूर्य हो गया. तो ये वो भाव में है. लास्ट वर्स ऑफ दिस ना एक वन है. तस्मै नमो भगवते यदं स्वेन रोचिषा आत्मस्तं व्यञ्जयमास सधर्मं पातुमर्हति. अब ये जो ऋषि थे उनके बेटे, उन्होंने कहा हमारी समझ में, हमारे समझाने से नहीं समझेगा तो भगवान को प्रार्थना करते हैं. तो तस्मै नमो भगवते. Let us offer our restful obeisance to the Supreme Personality of Godhead, who by his own effulgence, while situated in himself,
has manifested this cosmos. May he also protect religion for all goodness. अब भगवान का सहारा लिया कि हमारे कहने से नहीं, क्योंकि बाबा हमारी बात नहीं सुन रहा है, भगवान आप इसका अब मार्गदर्शन कीजिए. Lust for sexual intercourse is so strong that it appears herein that Brahma could not be disused from his discrimination in spite of appeal by his great sons like Marichi. Therefore, the great son began to pray to Supreme Lord for good sense of Brahma. It is only by the grace of Supreme Lord that one can be protected from allurement of lusty material desire. The Lord gives protection to devotees who are always engaged in His transcendental loving service. And by His causeless mercy, He forgives the accident fall down of a devotee. कहाँ लिखा है? अपिचे सदाचारो भजते माम अन्यवा साधुरेव सम्मन्तव्य विवस्तो ईश्वर. इसका एक्सप्लेनेशन क्या है अपिचे सदाचारों का? इसका किसी को याद है परपट में क्या लिखा है? Due to previous habits, accident of previous proclivities, he is unable to fast down. ये एक परपट है जो प्रभुपाद ने भक्ति विनोद ठाकुर का लिया है. There are two type of activities, conditional and constitutional. Constitutional is devotional, conditions are accidental, sometimes that can happen. So devotee constitutionally is situated in his devotion, but conditionally he may have some accident fall down. So that should not be condemned. तो कंडीशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल वहाँ है. ये परपट कभी ध्यान से पढ़िएगा, ये परपट भक्ति विनोद ठाकुर का. अब मैंने आपसे ये क्यों पूछा है, इसका 3 कमेंट्री है इस श्लोक के ऊपर. एक कंजर्वेटिव है, डिवोटी कर ही नहीं सकता है पाप. इसका मतलब है सूर्य कभी ठंडा हो ही नहीं सकता, लक्ष्मी कभी भिखारी हो नहीं सकती है. तो हाउ कैन डिवोटी मेक मिस्टेक? इट मीन्स इफ एट ऑल इट बिकम्स, जैसे लक्ष्मी भिखारी बन जाए तो भिखारी नहीं कहना चाहिए क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल. एक तो ये कमेंट्री है. दूसरी है लिबरल. कोई भक्ति कर रहा है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंटली पुराने संस्कारों के कारण ही मे फॉल डाउन, सो ही शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ विक्टिम. तीसरी कमेंट्री रसिक है, सुनिए कभी आपने. अपिचेत दुराचारो, मैं श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास कराऊं, ये दुराचार है. और जो इसका भक्त है भजन्ते माम अनन्य भाग, वही असल में साधु है. मैं क्या काम कर रहा हूं? दुनिया की दृष्टि से दुराचार है ना. जो मेरा भक्त है वो साधु है. दूसरे तो बाद में बनेंगे, वो पहले से साधु है. वो ठीक तरह मुझे समझ गया. तो ये इसका एक रसिक कमेंट्री है. संभवतः ये भी भक्ति विनोद ठाकुर की है, ध्यान में नहीं है इस वक्त में. जो भी हो, so Lord gives protection to devotees who are always with him. Therefore sage Marichi prayed to the mercy of the Lord and their prayers were fruitful हो गई. Though receiving these instructions, Brahma did not become delighted. बच्चों के कहने से ब्रह्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ा. This indicates that lust will not dissipate unless Supreme Lord shows mercy. काम से तब तक नहीं बचेंगे जब तक भगवान कृपा करें. Remembering this, the sages then surrendered to the Lord. Last verse of this section. Saitham granatas putram puro drishtvaha prajapatim prajapatis patis tanvam tyajah viruditta tada Tam disho jagror ghoram niharan yada vidustamaha. The father of all Prajapati, Brahma, thus seeing all his Prajapati's son is speaking in that way, become very much ashamed and at once gave up
The body he had accepted by which he was running behind the walk. He gave up that body. ये भगवान ने कृपा की. Later, that body means body which was attracted to own daughter, appeared in all direction as dangerous fog in darkness. वो निहार बन गई. निहार का मतलब फाग. ऐसे वो जो ब्रह्मा ने अपनी शरीर छोड़ा वो अंधकारमय फाग बन गया. The best way to compensate for one's sinful act is to give up one's body at once. And Brahma, the leader of the living entity, showed this by his personal example. Brahma has a fabulous duration of life, but he was obliged to give up his body due to his grievous sin. Even though he had merely contemplated in his mind without having actually done it. This is a lesson for the living entities, showing how sinful an act it is to indulge in unrestricted sex life. Even if to think of abominable sex life is sinful, and to compensate for such act, one has to give up his body. In other words, one's duration of life, blessing, opulence, etc. are decreased by sinful acts. And the most dangerous type of sinful act is unrestricted sex. Ignorance is cause of sinful life, and the sinful life is cause of gross ignorance. एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. The feature of the ignorance is darkness or fog. Darkness or fog still cover the whole universe, and the sun is the only counteracting principle. One who takes shelter of Lord, the perpetual light, has no fear of being annihilated in the darkness of fog or ignorance. निहारम इव भास्कर. कहाँ है श्लोक है? 6th कैंटो को है. कहाँ आपने पढ़ा है? नेक्टर ऑफ डिवोशन में पढ़ा है. कहाँ पढ़ा है? क्लेशन घनी में पढ़ा है. क्लेश घनी में पढ़ा है कि भक्ति से वो पिढ़ाया क्या? इसको देना है, जा रहा है तो अंजना. हाँ? हरि बोल, हरि बोल. यार तो पेड़ा खड़ी है बारण के लिए. हरे कृष्णा. हाँ, वहां हमने पढ़ा है वहां कि ज्ञान पाप करने की प्रवृत्ति को रोक सकता है, लेकिन उसके बीज को नाश नहीं करता है. उसका उदाहरण क्या है? गुलम, बंबू. बांस को आग लगा दो, ऊपर जल जाएगा, जड़ पड़ी होगी, बरसात आएगी, मोटा बांस निकले. तो ज्ञान ऊपर से जलाता है लेकिन अंदर जड़ रहती है. भक्ति क्या करती है? निहारम इव भास्कर. सूर्य निकला तो कोरे का नाम निशान नहीं रहेगा. तो भक्ति जड़ से निकाल देती है इग्नोरेंस को, जो सारे दुख का कारण है. दुख का कारण है इग्नोरेंस. इग्नोरेंस से होता है सिंफुल डिजायर, उससे होता है सिन, सिन से होता है सफरिंग. तो यहां लिखा है गिविंग अप हिज बॉडी इंडिकेट दैट द चीफ रेमेडियल मेजर फॉर ग्रेट सिन इज डेथ. Since it is impossible for Brahma to die before his lifespan of 2 prarabdhas is complete, giving up his body means giving up a disposition. Giving up disposition. The directions are covered with darkness even today. His disposition मतलब जो विचार आया था उसको त्याग दिया. वो विचार अभी भी कोरे के रूप में दुनिया में दिखाई दे रहा है. इसका मतलब ब्रह्मा ने कभी अपराध किया था, अभी तक कोरा हो रहा है. नेक्स्ट. यस. हाँ, ब्रह्मा का क्या बुद्धि का है? हमने लिखा था, वहां लिखा था विज्ञानमय, और उसका लिया था प्रिजाइडिंग डिटी ऑफ इंटेलिजेंस. बुद्धि का प्रिजाइडिंग डिटी लिखा था.
ब्रह्मा का शरीर बुद्धि का बना हुआ है। हो सकता है उस विज्ञान में भी किसी ने परिभाषा ये की है, अभी हमें मालूम नहीं है कि ब्रह्मा के शरीर से ये सब ऋषि निकले हैं, उन सब का ऋषि फिर तो बुद्धि का शरीर होना चाहिए, लेकिन इनका सबका बुद्धि का तो नहीं लग रहा है। मेरे अंडरस्टैंडिंग में कभी है कि बुद्धि का शरीर ब्रह्मा का जो बना हुआ है, ये मैंने नहीं इसको ऐसे कभी समझा है। ये जरूर हमने पढ़ा था कि प्रिजाइडिंग ड्यूटी ऑफ इंटेलिजेंस है ब्रह्मा, लेकिन ब्रह्मा का शरीर बुद्धि का बना हुआ है, वेदमय है शरीर, वेदमय शरीर जरूर है। यहाँ पे भी वो सटीक बैठता है, जब शरीर उन्होंने छोड़ा, बुद्धि का शरीर तो बुद्धि को छोड़ के नया शरीर स्वीकारते हैं, नई बुद्धि स्वीकारते हैं। कहा जा सकता है, मैं इसके आई एम नॉट रियली अवेयर ऑफ दिस। और आगे के लोगों में तो वैसे तो जी इथेरियल बॉडी लेवल हो जाता है, मतलब ये जो ग्रॉस मैटर्स होते हैं, जल, वायु, जल, अग्नि और ये और निश्चित रूप से ये ऐसे तो नहीं है कि इतना लंबा जीता है तो उसके शरीर में कोई स्पेशल विशेषता जरूर होगी, लेकिन अब वो बुद्धि है तो ये नहीं कहा जा सकता है। मैं नहीं जानता हूँ इसको ऐसे। तो ये अंधेरे के में पूरे संसार में है, तो जब अंधेरा आता है तो लोग मन ये सब गलत काम है, अंधकार सारे संसार में तो अंधेरे में लोग गलत काम करते हैं। क्या कह रहे हैं? अंधेरे में लोग गलत काम करते हैं, ये इसका मतलब गलत काम करना अंधेरे में होता है। ब्रह्मा जी ने अपने गलत काम को छोड़ा है, लोग अभी तक कर रहे हैं। ठीक है। The shloka, 30 number shloka, the sons they are telling that not even any Brahma, any other Brahma attempted like this. That means these 10 sons of Brahma. इसका मतलब पहले भी ब्रह्मा तो हो गया, ब्रह्मा आर कंटिन्यू। और प्रभुपाद ने लिखा देयर आर मेनी ब्रह्मास इन अदर प्लैनेट्स आल्सो, दे हैव नेवर डन लाइक दैट। These sons came after the father. ये भी आते जाते रहते हैं, आफ्टर ऑल दे आर सोल्स, दे वर बिफोर आल्सो, and but at least they can go to all the planets, they see other planets, they have also Brahma, they have not done like, there's no history like that. Connection with the previous verse number 43 to 49, Brahma's further creation, 34, 37, 4 Vedas. The status of exalted personality is not contaminated by apparently arduous transgression of morality. Brahma's power of creation did not diminish due to his distraction because of work. Brahma continued his creative service. कदाचित् ध्यायतः श्रेष्ठो वेदा अस्मच्चतुर्मुखात् कत्सकर्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा. Once upon a time when Brahma was thinking of how to create the world as in the past millennium, the 4 Vedas which contained varieties of knowledge become manifested from his 4 mouths. As fire can consume anything and everything, Prabhupada is continuing still the story of Vak. As fire can consuming anything and everything without being contaminated, so by the grace of Lord, the fire of Brahma's greatness consumed his desire for the sinful act of sex with his daughter. The Vedas are the source of all knowledge, and they were first revealed to Brahma by the mercy of Supreme Personality of Godhead, while Brahma was thinking of recreating the material world. Brahma is powerful by dint of his devotional service unto the Lord, and the Lord is always ready to forgive his devotee if by chance he falls down from the noble path. Srimad Bhagavatam says, this is in the Srimad Bhagavatam 11.5.2. Swapadamoolam bhajataha paryasyahat vyaktyanaha bhavasari parveshakirmacha chopatitam katham chudnoti sarvam hirdi
Sanivishtaha. Any person who is engaged 100% in the transcendental loving service of the Lord at the Lord's feet is very dear to the personal of Godhead Hari, and the Lord, being situated in the heart of the devotee, excuse all kinds of sins committed by chance. It was never expected that a great person like Brahma would ever think of sex indulgence with his daughter. The example shown by Brahma only suggests that the power of material nature is so strong that it can act upon everyone, even Brahma. Brahma was saved by the mercy of Lord with the little punishment, but by the grace of the Lord, he did not lose his prestige as a great Brahma. It is said, what is said here? It is said, this is a verse from 10th canto, 33 chapter. The status of the powerful control is not harmed by any apparently arduous transgression of morality we may see in them, for they are just like the fire, which devour everything fed into it and remain unpolluted. प्रभुपाद ने इस वर्ष का प्रेफरेंस से परपट शुरू किया है. धर्म व्यक्ति कर्मो दृष्ट ईश्वराणाम च सहासम तेजस्याम न दोष्येद वहनि सर्वभुजो यथा. Thus one should not worry that Brahma was contaminated by being attracted to his daughter. To express this, the power of the Brahma is described in this verse. His position will be described later in the chapter. क्या कहा जाएगा? The Supreme Lord, who is impersonal Brahma and the personal Lord filled the various Shaktis, makes his appearance as Brahma, whose body is composed of Veda, which is audible sound as Vaikari and inaudible as Om. ये 48 वर्ष है. शब्द ब्रह्मात्मस्तस्य ये आएगा next verse. Thus, meditating on how to create, he had done previously. The Veda appeared. This means that the complete method of creation existed in Vedas. By consulting the Veda, he could follow the order of the Lord to carry out creation with ease. Next, verse number 35. Chaturhotram karam tantram upavedanaihi swasa dharmasya padas chatvaras taiteva ashram vritayah. The four kind of paraphernalia for conducting the fire sacrifice become manifest. The performer, the chanter, the offerer, the fire, the action performed in terms of supplementary Vedas, also the four principles of religiosity, truth, austerity, mercy and cleanliness, and the duties in four social order all become manifest. The action of Hota, Udgata, अधरव्यो और ब्रह्मा, ये चार प्रकार के प्रीस्ट होते हैं यज्ञ के. और ये एंड द फोर पार्ट्स ऑफ द धर्म सत्य, शौच, तप एंड दया, ये हमने पढ़ा है पहले स्कंद में. धर्म के चार वो हैं. द आश्रम एंड ऑक्यूपेशन अपीयर्ड फ्रॉम द माउथ. Prabhupada, eating, sleeping, defending, mating are the four principles of material body demands, which are common to both the animals and the human beings. To distinguish human society from the animal, there is performance religious activities in terms of social status and order of life. इसका मतलब वर्ण आश्रम. They are all clearly mentioned in the Vedas, Vedic literature, and were manifested by Brahma when the four Vedas were generated from his four mouths. Thus, the duties of humankind in terms of the status and social order were established to be observed by civilized men. Those who traditionally follow this principle are called Aryan or progressive human civilized. Chaturhotram refer to the action of Hota, Udgata, Udrava and the Brahma, priest. Karma Tantram means profusion of sacrificial act. And ashrama and occupation appeared along with the Upavedas and scripture on logic.
Verse 36. Vidurvacha Savai Vishwasarjamisho Vedadin Mukto Asraja Yad Yad Yena Srajat Devas Tanme Brohit Tapodhana. Vidu said, great sage, whose only wealth is penance, kindly explain to me how and with whose help Brahma established Vedic knowledge which emanated from his mouth. Maitreya Vacha Rigyajo Samatravakhyan Vedan Purvadi Bhi Mukhi Shastram Vidyam Stuti Stotram Rashchitam Vyathat Krama. Maitreya said, beginning from the front face, जो आगे वाला, जो सामने face है, gradually the four Vedas, Rik, Yajur, Sam and Athur become manifest. Thereafter, Vedic hymns, which had not been pronounced before, priestly rituals and subject matter of the recitation and the transfer activities were all established one after another. Maitreya said, from Brahma's eastern mouth, eastern का मतलब सामने वाला, the Rig Veda and the activities of Hota were established. From his southern mouth, इसका मतलब right side, Yajurved, the activities of the दूसरा priest, क्या नाम है उसका, अधर्वा were established. From his western mouth, मतलब back, the Sham Ved and the activities of the Udgata were established. And from his northern mouth, means left, face, the Athro Ved and the activities of Brahma were established. तो चार प्रकार के जो यज्ञ करने वाले हैं, चार वेद, कौन सा वेद कौन से मुख से निकला? तो ईस्ट का मतलब फ्रंट से ऋग, फिर राइट, उसके राइट साइड से यजुर, बैक से साम और अथर्व बैक से, और इनके साथ एक एक जुड़ा हुआ है, होता, अधर्वा, ब्रह्मा और उद्गाता. This verse describes the creation of four hotas. Action of hota is shastra, chanting of the mantra without intonation, following Rig Veda. Action of the Adharva is sacrificial performance, Ijya, following Yajurveda, singing verses. Stuti Stotram is the action of Udgata, the following Samveda, and this takes from the Trivita Stoma. The action of the Brahma following the Atharvaveda is a remedial manner. तो ये हर का काम क्या है यज्ञ करने में, और वो कहाँ से निकला? Verse 38. Ayurvedam dhanurvedam Gandharvam Veda Atmanaha Stapyatam cha srajadvedam Karmat Purvad Bhi Mukhi. He also created the medicinal science, Ayurveda, military science, musical art, and architectural science, Stapati. All from the Vedas. They all emanated from one after another, beginning from the front face. इसका मतलब आगे से फिर राइट फिर बैक, और जैसे वो निकला ऐसे ये निकले. Brahma created Ayurveda, Dhanurveda, Gandharvaveda, Stapatya Veda from his mouth starting from eastern. तो सामने से धनुर्वेद निकला, सामने से आयुर्वेद, राइट से धनुर, बैक से गंधर्व, और लेफ्ट से स्थापत्य. The Veda contain perfect knowledge which include all kind of knowledge necessary for the human society, not only on the particular planet but on the other planet as well. It is understood that the military art is also necessary knowledge for the upkeep of social order, as is the art of music. All these groups of knowledge are called Upa Purana, or supplement of Vedas.
Spiritual knowledge is the main topic of the Vedas, but to help the human beings' spiritual pursuit of knowledge, the other information as above mentioned forms the necessary branches of the Vedic knowledge. This verse describes the creation of Upaveda. Sthapityam refer to the activities of the architects, which is described in Vishwakarma Shastra. इतिहास पुराणानि पंचमं वेद ईश्वरः सर्वेभ्यो एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः. Then he created the fifth Veda, the Purana and the histories, from all his mouths, since he could see all the past, present and future. There are histories of particular countries and nations and the world. But the Puranas are the histories of the universe, not only in 1 millennium, but in many kalpas. Brahma has knowledge of those historical facts, and therefore all the Puranas are histories. As originally composed by Brahma, they are part of the Vedas and are called fifth Veda. इतिहास में सिर्फ हिस्ट्री होती है, पुराण में हिस्ट्री के साथ टीचिंग होती है. History accompanied by teaching is called Puran. Only history is called Itihas. Fifth Ved came from his mouths, all mouths, since the fifth Ved embodies all the Vedas. Tattva Sandrava 13. Api chachat sakshad eva Veda shabdah priyuktaha pranebhya aswa. The word Veda in 3:12:39 is directly used here to indicate the Purana and Itihas. तो पुराण इतिहास को भी वेद कहा गया है. तत् संद्रव word sasraje means Brahma manifested fifth Veda. It was not created. Manifested मतलब पहले था, उसको प्रकट किया. षोडश्यः उतकौ पूर्ववक्त्रा Uryase Agnishtutvata Aptoryamatryyatraucha Vajapayam Sagosavam. All the different varieties of fire sacrifices, Sodashi Uktaha, नाम है इसका, Sodashi Uktaha Purishi Agnishtoma Aptroyama Atitratra Vajpaya and Goswat become manifest from the eastern mouth of Brahma. ब्रह्मा के फ्रंट मुख से ये सब यज्ञ निकले. This verse describes the various sacrifices, Karma Tantram, mentioned earlier. Purushi means preparation of the fire. Agnishtuta means Agni Stoma. These two appeared from the Brahma's southern mouth. The other part pair arose from the other mouths. चार्ट बनाए नहीं, वो जगह खाली पड़ी, आप बनाना. 41 विद्यादानं तपस्सत्यं धर्मस्येति पादानि च आश्रमं च यथा संख्याम् असत्सह वृत्तिभिः. एजुकेशन, चैरिटी, पेनेंस एंड ट्रुथ. देखो यहाँ धर्म के चार ओर आए हैं, इसको हमको उसमें फिट करना है. कौन से? तपस्या, दया, पवित्रता और उसमें इन चार को रखना है. देखना, एजुकेशन, चैरिटी, पेनेंस एंड ट्रूथ आर सेड टू बी द फोर लेग्स ऑफ रिलीजन. एंड टू लर्न देयर आर फोर ऑर्डर्स ऑफ लाइफ with different classification of caste according to vocation. Brahma created all these in systematic order. Knowledge means purity. Charity means mercy. अब तो आप देखो नॉर्मल हो जाएंगे. And penance and truth are said to be the four legs of the religion. And to learn this, there are four orders of life with different classification of caste according to the vocation. Brahma created all of this. Prabhupada's purport. कोई पढ़े?
The nucleus of the four social orders, brahmacharya or student life, grahastha or household family life, vanprastha or retired life, for practicing penance and sannyas or renounced life for preaching the truth, is the four legs of religion. The vocational divisions are the brahmanas or the intelligent class, the kshatriyas or administrative class, the Vaisyas or mercantile productive class, and the Sudras or general laborer class, who have no specific qualifications. All were systematically planned and created by Brahma for the regular promotion of self-realization. A student life is meant for acquiring the best education. Household family life is meant for gratifying the senses, provided it is performed with a charitable disposition of mind. Retirement for household life is meant for penance. For advancement in spiritual life, and renounced life is meant for preaching the absolute truth to the people in general. The combined actions of all members of society make the whole situation favorable for the upliftment of the mission of human life. The beginning of this social institution is based on education meant for purifying the animal propensities of the human being. The highest purificatory process is knowledge of the Supreme Personality of Godhead, the purest of the pure. Regarding purity, the Yagnavakya Smriti says, from knowledge of the Supreme Lord arises the highest purity of a jiva. तो जो एजुकेशन है वो प्योरिटी हो गई, और ब्रह्मचारी है उसका काम है एजुकेशन. इसका मतलब प्योरिटी ब्रह्मचारी के धर्म का स्तंभ में आ गया. ठीक है. Thus knowledge can be equated with purity. Charity can be equated with mercy, since it is said, those engaged in pious acts do not achieve 1/16th of the result of the person who bestow in charity fearlessness to living entities. तो चैरिटी जो है ये गृहस्थ का काम है. ये धर्म है, गृहस्थ का धर्म है. ब्रह्मचारी का धर्म क्या है? प्योरिटी मीन्स नॉलेज. गृहस्थ का धर्म है चैरिटी, विच मीन्स जो दूसरा धर्म का स्तंभ. वानप्रस्थ का क्या काम है? पेनेंस. So, thus there is no contradiction between the previous statement tapas socham dayas satyam hi padaha hari, जो पहले आपने पढ़ा था श्लोक उसमें था, और इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ज्ञान से प्योरिटी आ जाती है, चैरिटी से मर्सी हो जाती है. ठीक है. और ब्रह्मचारी प्योरिटी में आया, गृहस्थ चैरिटी में आया, वानप्रस्थ तपस्या में आया. बाकी क्या बचा? चौथा बचा क्या? सत्य. सत्य का प्रचार करना सन्यासी का काम है. ठीक है, परम सत्य का. तो अब ये दो चारों को मिला के ब्रह्मचारी चार आश्रम में कैसे लगाया है, इसको समझने का है. ठीक है. आश्रम के समस्या. ओके. वर्ष 42. सावित्रम प्रजापत्यम च कामं चात व्रत तथा वार्ता संजय शालिनी श्लोच इति वै ग्रहे. The thread ceremony for the twice born was inaugurated, as were the rules to be followed for at least 1 year after acceptance of Vedas. Rules for observing complete abstention from sex life, vocation in terms of Vedic injection, various professional duties in household life, and the method of maintaining a livelihood without anyone's cooperation by picking up rejected grains. 4 type of brahmachari. ये हैं 4 type के brahmachari. This verse explained 4 type of brahmachari. 4 type of brahmachari: Savitra, Prajapatya, Brahman, and Brat. Arose from Brahma's 4 mouths. The 4 occupation of the household: Varta, Sanchaya, Salina,
and Silochana aroused from his poor mouth. अब इसका purport श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं? During the slow life, the brahmachari were given full instruction about the importance of the human form of life. Thus, the basic education was designed to encourage the student to become free from family encumberments. Only students unable to accept such a woe in life were allowed to go home and marry a suitable wife. Otherwise, the student would remain a permanent brahmachari, observing complete abstinence from sex life for his whole life. It's all dependent on the quality of student's training. We had the opportunity to meet the aved brahmachari in personality of our spiritual master, Om Vishnupad Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj. Such a great soul is called Naishtiki Brahmachari. तो चार प्रकार के ब्रह्मचारियों को सुन लिया आपने. आप कौन से हो? After taking a sacred thread, remaining celibate for 3 nights is called Savitra. यज्ञोपवीत के बाद 3 दिन के लिए ब्रह्मचार्य पालन करे, 3 रात, तो सावित्र ब्रह्मचारी कहते हैं. ये असल में क्या है आपको पता नहीं है. ये कस्टम में ये होता था, शादी से पहले यज्ञोपवीत करते थे तो उसको 3 दिन ब्रह्मचारी रहना पड़ता था. उसके बाद गृहस्थ में प्रवेश करना, कम से कम 3 दिन पहले जनेऊ पहनाने चाहिए. ये कुछ रूल्स हैं. और फिर रिमेनिंग सेलिब्रेट फॉर ए ईयर इज कॉल्ड प्रजापत्य. 1 साल यज्ञोपवीत के बाद रहे प्रजापत्य. रिमेनिंग सेलिब्रेट अंटिल द लर्निंग ऑफ द वेदा इज कॉल्ड ब्रह्म. 25 साल तक रहे जब तक पढ़ रहा है. व्रत मीन्स सेलिबेसी इज टिल डेथ. वार्ता रेफर टू ऑक्यूपेशन नॉट फॉरबिडन सच एज एग्रीकल्चर. Sanjaya means performing sacrifice. Shalini means taking alms without begging. And Silochan means taking fallen grains in the field. Shil and Uchan are combined in a dvand in the singular. They are combined together with the same meaning. These are 4 type of occupation for householder. तो गृहस्थियों को ये 4 काम करना है. यज्ञ करे, एग्रीकल्चर करें, और फिर सील और सिलोचन. वर्स नंबर 43. वैखान सहावाल ख्यल्लो दुम्भराह फेन पावने न्यासे कुटिचक पूर्वम बहवोद हंसः निष्क्रियो. अब पहली है 4 प्रकार के वानप्रस्थी, दूसरी में है 4 प्रकार के सन्यासी. थोड़ा सा डिफरेंस है, प्रभुपाद लिखते थे उसमें. 4 डिवीजन ऑफ रिटायर्ड लाइफ आर वैखानस, वैखानसस, वाल्किल्यास, औदभरस और एनपा. The 4 division of renounced order called Kutichak, Baudak, Hans और निष्क्रिय. All these were manifested from Brahma. और उस जैसे नाम है ऐसे फ्रंट से राइट, राइट से बैक, बैक से लेफ्ट. ओके. अब प्रभुपाद क्या लिखते हैं? वर्णाश्रम धर्म of institution of 4 division and order of social and spiritual life is not a new invention of modern age as propounded by the less intelligent. It is an institution established by Brahma from the beginning of the creation. This is also confirmed in Bhagavad Gita चतुर्वर्ण्यम. और यहाँ लिखा है, अब ये कौन से वानप्रस्थ होते हैं देखें. वैखांस वानप्रस्थ लिव्स ऑन द वाइल्ड ग्रेन्स, जंगल के अन्न के ऊपर. एंड वाल्केलिया गिव्स अवे अक्यूमुलेटेड ग्रेन्स ऑन गेनिंग न्यू ग्रेन्स. नए मिले पुराने दान कर देंगे. औदम्भरा लिव्स of that he required by walking in the direction he sees and getting up in the mind. सुबह उठ के चल बसेगे, जो रास्ते में मिला खाओ, नहीं तो चलो. जिस तरफ गया उधर जो होगा खाएगा, नहीं तो छुट्टी. ये औदम्बर वानप्रस्थ है. And Phenap lives off grain or fruits which have naturally fallen on the ground. पेड़ के नीचे जाएगा, कुछ गिरा है खाएगा, चलो. ये 4 प्रकार के वानप्रस्थ. आजकल एक भी नहीं मिलेगा. These are the different types of vanaprastha arising from the different means of sustenance. There are 4 types of sannyas. Kutichak,
mainly concentrate on the karma in his own hermitage. अपने ही घर में कुटिया में रहेगा कुटीचक. बाहुदक reject actions and mainly concentrate on ज्ञान. ये बाहुदक, ये ज्ञान मतलब उपनिषद पढ़ेगा. The Hans fixed knowledge and Nashkriya has attained realization. The later tribes in the list are superior to the previous. और प्रभुपाद ने हमको कौन से पढ़ाया है? पहला वाला सेम कुटीचक, और जो अपने गांव के पास रहे, घर से रोटी आए वही खाए, ये है कुटीचक. बाहुदक का मतलब थोड़ा दूर चला जाए फिर वापस लौट के आए. फिर है परमहंस, परिवर्तक और फिर परमहंस. तो ये यहाँ थोड़ा नाम में अंतर है. अनवीक्षकी त्रय यात्रा दंड नीतिस्तथैव च एवं व्याहृत्यासन् प्रणवो हे अस्य दहरतः. The science of logical argument, the Vedic goals of the life, and also law and order, moral codes, and celebrated hymns, Bhu, Bhwa, and Swa, all become manifest from the mouth of Brahma, and the Pranava Omkar was manifested from his heart. The logic, Vedic knowledge, occupational livelihood, law, and enforcement arose from his four mouths. Bhurvaswa and Bhurvaswa arose from his four mouths, and Om from his heart. Chakravarti Padlai's logic and other types of knowledge arose from the eastern or other mouths in the succession. The first four items, starting with logic, represent moksha dharma, calm, and earth. Vyahirta means individual words. Bhuvaswa and their combination Bhurvaswa, these four arose from the four mouths. Thus, Ashwalyan Sutra says, Evam Vihartaha Proktaha Vyastaha Samastapi. Viharti means individual, component, and combination. Or the four items can be Maha, Bhur, Bhva, Swa iti. Va etas trishro, ये पढ़ लेना. The three Vihartis are the Maha Chamasya taught in fourth called Maha, Taittiriya Upanishad. It means the space in the heart. An alternative reading is Dhartaha, the same meaning. So ये थोड़ा टेक्निकल है कि क्या कहाँ से निकला है. अब हम पहुँच गए वर्ड 45 में. तस्यो शिंगासिल्लोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभो दृष्टुं नाम सात् श्नोतो अनुष्टुप जगति स्तनः प्रजापते. Thereafter, the art of literary expression, उष्णिक, ये छंद है, जो संस्कृत के छंद है, उष्णिक, was generated from the hair on the body of the Almighty Prajapati Brahma. Principal Vedic hymn Gayatri was generated from his skin, Trishtupa Chanda from the flesh, Anushtupa Chanda from vein, and Jagati Chanda from bones of the Lord of the living entities. This verse describes the origin of the Vedic meters. Snuta means the vein. Okay. Verse number 46. Madayaha pankahi utpana brahati pranato abhava. The art of writing verse, pankati, became manifested from the bone marrow, and that of the Brahati, another type of verse, was generated from the life breath of Lord of the living entities. The Pankti is 40 syllables.
arose from his marrow, and breath is 36 syllables, arose from his प्राण. तो ये अलग संस्कृत के लिखने के. This words describe the origin of the various sounds in speaking. Sprash refer to the 5 classes of consonants with their nasal. Swar refer to the vowels starting with a. Ushamman refer to the sha, sha, ha, and well. And Anasthata refers to the semi-vowel ya, ra, la, va, sha. Shaptah swara refers to the musical notes beginning with a shadaja. These arose from the play Viharan. Sprashastasya bhavajjivaha swaro deha udavrita ushmanam indriyanyaho antah staha balam atmanah sarvaha saptah viharena bhavanti samaprajapate. Brahma's soul was manifested as touch alphabets, his body as the vowel, his senses as the sibilant alphabets, his strength as the intermediate alphabets, and his sensual activities as 7 notes of music. Prabhupada ji ne ye pura likha hai. In Sanskrit there are 13 vowels, 35 consonants. The vowels are a, e, o, u, ra, le, I, o. And the consonants are ka, ga, nga. Among the consonants, the first 25 letters are called sprashas. And there are also 4 antahastha of the ushma. These are there in the called talva, murdhanya and dantya. Musical notes are sara, gama, pani. And all the sounds, vibration are originally called Shabda Brahma, or spiritual sound. It is said therefore that Brahma was created in the Mahakalpa as the incarnation of a spiritual sound. The Vedas are a spiritual sound, and therefore there is no need of material interpretation for sound vibration of Vedic literature. The Vedas should be vibrated as they are, although they are symbolically represent the letters which are known to us materially. In the ultimate issue, there is nothing material because everything has its origin in the spiritual world. Material manifestation is therefore called illusion in the proper sense of the term. For those who are realized souls, there is nothing but a spirit. This verse shows that Brahma has extraordinary power as manifestation of Lord. The body is composed of Veda Brahma, the supreme Lord. एक बात है वेद का मतलब ज्ञान, और ज्ञान बुद्धि में आता है, तो अब आप बुद्धि में बना लो. लिखा है his body, Brahma's body is made up of Veda शब्द ब्रह्म. the शब्द ब्रह्म ज्ञान हो गया, ज्ञान बुद्धि में रहता है. ऐसे इसको you can go like that. The Supreme Lord appears as a worshipable object in the form of Brahma, whose body is the Veda, manifested as external sound, Vaikari, and unmanifested sound, Om. Their Lord is also manifested as Brahman, and object of impersonal Gyan, and the Bhagavan, the object of pure personal knowledge, filled with the many Shaktis. Since Brahma is non-different from the Lord, it is understood that he has not been contaminated by approaching his daughter. वो यहाँ तक अभी तक कथा चल रही है. There is no difference between Veda, Vaikhari and Om. वैखारी माना आवाज में बहुत बोलना है. वैखरी वाणी से बोलना means the sound which somebody can hear. और जो ओम है unmanifested sound, इसका उच्चारण लिप्स में होना चाहिए. उपांशु, वैखरी, उपांशु एंड मानसिक, 3 प्रकार का उच्चारण होता है वेद का. एक तो गा के करते हैं, और एक सिर्फ गायत्री पढ़ते हैं, अंदर करते हैं. तो दिस इज इन वर्ड ऑफ वैखरी, which means external sound, and unmanifested sound is Om. That is Upanshu.
Oh, last but one verse of this section. शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्त्वा व्यक्त्वात्मनः परः ब्रह्मावभाति विततो ज्ञानशक्त्या उपब्रह्मणितः. Brahma is the personal representation of Supreme Personality of Godhead as the source of transcendental sound, and therefore above the conception of manifested and unmanifested. Brahma is the complete form of absolute truth and is invested with multiple inner energies. The Supreme Lord, who is impersonal Brahma, and the personal Lord filled with various Shaktis, make his appearance as Brahma, whose body is composed of Veda, which is audible sound as Vaikhari and inaudible as Om. Post of Brahma is the highest responsible post within the universe, and it is offered in the most perfect personality to the most perfect personality of the universe. Sometimes Supreme Personality Godhead has to become Brahma when there is no suitable living entities to occupy the post. In the material world, Brahma is the complete representation of Supreme Personality Godhead, and transcendental sound Pranava comes from him. He is therefore invested with the multifarious energies from which all the demigods like Indra, Chandra, Varuna are manifested. His transcendental value is not to be minimized. Even though he exhibited a tendency to enjoy his own daughter, there is a purpose for exhibition of such tendency of Brahma, and he is not to be condemned like an ordinary living entity. Giving up his previous body, which became mist and darkness after desiring walk, Brahma accepted another body without pollution of forbidden acts of lust. This Shabda Brahma body remained with Brahma at all times. अब ब्रह्मा का एक नाम और हो गया शब्द ब्रह्म बॉडी जिसकी है, शब्द ब्रह्म. Last verse of this section, वर्ष ही नहीं है, सिर्फ वर्ड टू वर्ड लिखा है. ततः पराम उपादाय ससर्गाय मनः ददे. वो भी पढ़ के थक गया होगा, लिख के आपकी तरह. Thereafter Brahma accepted another body in which sex life was forbidden, and thus he engaged himself in the matter of further creation. ये शब्द ब्रह्म वाली बॉडी. Purport. In the former body, which was transcendental, affection for the sex life was forbidden. और in the former body मतलब ब्रह्मा की जो वेद वाली ब्रह्म वाली, अब उसने एक दूसरी बॉडी ले ली. कौन सी? In the former body there was a transcendental affection for sex life was forbidden, and Brahma therefore had to accept another body to allow himself to connect it with sex life. इसका मतलब स्वयं को नहीं, अपने राइट हैंड साइड से ब्रह्मा और स्वयंभू मनु को, लेफ्ट से शत्रुपास को निकालेगा और वो सेक्स से दुनिया बढ़ाएगी. इसका अर्थ ये है. He thus engaged himself in matter of creation, his former body transformed into the fog as previously described. ये हो गया. Brahma had thought that Marichi and others whom he had previously created would create a huge population. However, he again made efforts. अभी वो समझा कुछ कमी रह गई. Deficiency in creation. 50 to 51. ऋषीणां भूरिः वीर्याणाम् अपि सर्गम् आवेस्तत्रम् ज्ञात्वा तद्दृढ्यः भूयात् चिन्त्यामासः कौरवः. O son of the Kuru, when Brahma saw that in spite of presence of the sages of the great potency, there was no sufficient increase in population, he seriously began to consider how the population could be increased. Aho adbhutam etanme vyapratrasyapi nityada nahi dhante prajanunam devam atra vighatakam.
Brahma thought himself, Allah, it is wonderful that in spite of my being scattered all over, there is still insufficient population throughout the universe. There is no other cause for this mass pursuit but destiny. Properly engaging himself, Yukta Kirtaha, and seeing his misfortune, one form of Brahma become two. One form of Brahma become two, one with a beard and other with a breast. Since the two bodies were related to the Brahma, which means Ka, they are known as Kaya, and his descendants are called Kha and Ayana, combined to know Kayana, which means descendant of Ka or Brahma. By the rule, ये तो रूल पढ़ते रहना, पतंजलि का है और इस पाणिनि के रूल को छोड़ते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, अब ब्रह्मा के एक तरफ से दाढ़ी वाला स्वयंभू मनु, एक तरफ से शत्रुपा लेफ्ट साइड से निकला, तो उनको कहा काया, और उनको का डिसेंडेंट हो गए कायन। Now the 50 to 50 cent creation of Swayambhu Manu and Shatrupa. 52. Evam yukta kirtastasya devam chavekshatastada kasya rupam abodevadha yat kayam abhichakshate. While he was thus absorbed in contemplating and was observing the supernatural power, two other forms were generated from his body. They are still celebrated as the body of Brahma. They are called descendant of Brahma. Same ko chal raha hai. Two bodies came out from the body of Brahma. One had mustaches and other had swollen breast. No one can explain the source of their manifestation. Therefore, until today, they are known as Kayan, or the body of Brahma, with no indication of their relationship to his son or daughter. Verse 53. Tabhyam rupa vibhagabhyam mithunam sampadyata. The two newly separated bodies united together in sexual relationship. Verse 54. Yasto tatra pumanyo babhon manoho syambho swara strihi sa yascha shatarupakya Mahisya asya mahatmanaha. Out of them, the one who had the male form became known as Manu, named Swayambhu, and the woman became known as Shatrupa, the queen of the great soul Manu. Verse number 55. Tada mithunena dharmena prajahe edham babhorvere. Thereafter, by sex indolence, they gradually increase generation of population one after another. 56. Sachapi shatarupaya panchaha patyani ajijanat priyavartutana padau Trisha kanyascha bharata akuti devuti cha Saraswati iti sattama. O son of birth, in due course of time, Manu begot in Shatrupa 5 children, 2 sons, Priyavartan Utanbad, 3 daughters, Akuti, Devuti and Prasuti. Last verse. Akutim ruchaya praja prada Gardamayato madhyama
दक्षायादात् परसुतिं च यत् आपूरितं जगत्। आकुटी की शादी प्रजापति रुचि के साथ हुई। उनका बेटा यज्ञ हुआ जिसको ब्रह्मा जी ने, जिसने स्वयंभू मनु ने गोद में ले लिया। और देवहूति बीच की लड़की थी, उसकी शादी कर्दम मुनि से हुई जिसका बेटा कपिल देव होगा। और 9 पुत्रियां हुई जो 9 ऋषियों को दी गई। और बेचारी प्रसूति की शादी दक्ष के साथ हुई और इसकी बेटी सती हुई। इसकी कथा 4थे स्कंद में आएगी। और इनसे सारा जगत भर गया। लिखा है यत आपूरितम जगत, सारा जगत इनसे भर गया। The father Manu handed over his first daughter Akuti to sage Ruchi, the middle daughter Devuti to sage Kardam, and the youngest Prasuti to Daksha. From them all the world filled with population. Prabhupada's purport कोई कौन पढ़ेगा लास्ट में? The history of the creation and population of the universe is given herewith. Brahma is the original living creature in the universe, from whom were generated the Manu Swayambhu and his wife Satrupa. From Manu 2 sons and 3 daughters were born, and from them all the population in different planets has sprung up until now. Therefore Brahma is known as grandfather of everyone, and the personality of Godhead, being the father of Brahma, is known as the great grandfather of all living beings. This confirmed in Bhagavad Gita 11:39 as follows. शशाङ्कः त्वं प्रजापतिश्चानो मानवस्तस् सहस्रस्य कृत्वा च भूयोऽपि नमो नमस्ते। 11th chapter, okay? हाँ जी। You are the Lord of air, the supreme justice Yam, the fire, and the Lord of rains. You are the moon, and you are the great grandfather. Therefore, I offer my respectful obeisances unto you again and again. Thus then the Bhakti Vedanta purport of 3rd canto 12th chapter of Srimad Bhagavatam entitled Creation of Kumaras and Others. मैराथन पूरा हुआ। अब कथा, अब बातें चीतें करो। What are your question or comments? इसको पहले एक ब्रह्मा थे, स्तन और दाढ़ी वाले। वो ब्रह्मा ने एक ही ब्रह्मा से एक, हाँ पहले एक थे, बाद में फिर 2 हुए। एक में एक का दाढ़ी चला गया और एक में स्तन आ गया। लिखने में ऐसे है, उसका अर्थ ये है कि ब्रह्मा जी के साइड हाथ, राइट हैंड साइड से दाढ़ी वाला एक ब्रह्मा जी का बच्चा पैदा हुआ और लेफ्ट हैंड से एक छाती वाली स्त्री पैदा हुई। लेकिन उनको पता नहीं कहाँ से आया, इसलिए उसको कहा काय के अयन है, काय के बच्चे हैं। और ये इनका जो बन गया उसका नाम हो गया काया, और उसका नाम मनु हुआ। उससे हम मानव बन गए। अब हाल फिलहाल तो दानव बने हुए हैं। अब आपका कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कोई टिप्पणी है तो कीजिए। यहाँ कथा को विराम देते हैं। आप कह रहे थे परसों की ज्ञानी क्या? शांत भक्तों के जैसे ही हैं लगभग। दोबारा कहिए। जो ज्ञानी लोग हैं वो शांत भक्तों के, शांत लोग जो शांत रस के होते हैं लोग, उनके जैसे ही हैं लगभग। और आप कह रहे थे कि जैसे शांत में भी अफेक्शन नहीं होता, ज्ञानी में भी ऐसे अफेक्शन नहीं होता। ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य टू रूप गोस्वामी में, कि कौन से स्तर पे स्नेह होता है तब दास्य भाव शुरू होता है। नहीं तो आई नो हु इज गॉड इज ऑल ग्रेट एंड आई हैव नो अटैचमेंट टू द वर्ल्ड। ये शांत रस की 2 चीजें, दुनिया से डिटैचमेंट, भगवान में भगवान के ऊपर फुल फेथ, लेकिन अभी तक भी भगवान में स्नेह नहीं है। तो ये ज्ञानी है, ये शांत रस है। और कोई अंतर ज्ञानी और शांत रस में? ये शांत रस, ये इसी को शांत रस कहते हैं। अब इससे आगे वाला जाएंगे तो दास्य रस आ जाएगा, स्नेह आ जाएगा। तो ज्ञानी तो पर्सनल तक ही जा रहा है, पर्सनल लेवल तो। अब सिर्फ ज्ञानी की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्ञान उसको इतनी जानकारी होती है कि भगवान गॉड इज ग्रेट एंड वर्ल्ड इज नॉट टू बी अटैच टू। 2 जिसके अंदर ये क्वालिटीज आए वो शांत रस। और उसका एग्जाम्पल है कुमार, और कुमार ज्ञानियों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए हमने ज्ञान कहा होगा।
और मैं समझता हूँ आप थक गए होंगे, कोई प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो कुछ अपनी राय दो। हाँ, निम्बार्क संप्रदाय में they chant that Yugal Must something that दे आल्सो वर्शिप राधा कृष्ण। यूजुअली दे हैव, अभी तो प्योर निम्बार की रहे नहीं है, नहीं तो उनका मुख्य उद्देश्य है लीला स्मरण। हमारा नाम स्मरण है, उनका लीला स्मरण है। वो क्रिश्चियनिटी में आते हैं, हाँ, कृष्ण क्रिश्चियनिटी में आते हैं आदम और ईव, तो इसका मतलब लाइक इधर से ही चालू है। कौन? क्रिश्चियनिटी फिलोसफी हाँ, Adam Eve से creation आदम से। हाँ। आदम पता नहीं, स्वयंभू मनु और शत्रुपा का नाम आदम नहीं हो, ऐसे भी हो सकता है कि उनके बेटों का नाम किसी को पता नहीं है, हमको पता है, फिर उनसे बोलो उनका काम कच्चा है। गुरु जी, आप ये सुबह बता रहे थे जब हम प्रणाम में आदर नहीं देते तो बल विद्या आयु और कम जनरेशन में तो एक प्रैक्टिकल चले जाते हैं। जैसे हम बाहर से आते हैं जब मंदिर में, तो हर कदम कदम पे भक्त होते हैं। हमारे आश्रम के साथी भक्ति है और बहुत सारे सेवरल ड्यूटीज हैं, सीनियर ड्यूटीज हैं, तो कदम कदम पे हम 2 दिन लग जाए भक्तों को मिलते मिलते प्रणाम ही करते रहे। दो दृष्टिकोण है। या तो रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह 1000 साधुओं को रोज प्रणाम करने का नियम बना लो, वो हमसे होगा नहीं। इसलिए सुबह सवेरे वांछाकत्रों में, कल्पत्रों में सबको प्रणाम कर लो, फिर आपका दिन सारा छुट्टी। सुबह वांछा कल्पत्रु कर दिया, सबको हो गया। एक नया भक्त थे पुराने जमाने में, कहा जाके भोजन ले आओ सामने सुपर स्टोर से, भूख लगी, बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो आया जल्दी फटाफट ऐसे ब्रेड में बटर लगाया को खाओ। उसने बोला अर्पण कब किया? बोला मैं सारा स्टोर अर्पण करके आया। स्टोर के सामने प्रणाम किया, मैंने कहा भगवान आपको अर्पण करता हूँ, सारा प्रसाद हो गया। तो आप सुबह वांछा कल्पत्रु अर्पण किया कर, सबको हो गया, और क्या। वैसे पुराने जमाने में मंदिर के भक्तों का सुबह मंगल आरती के समय जाते थे, वांछा कल्पत्रु में प्रणाम हो जाता था। फिर कोई महाराज, कोई ऐसे विशेष व्यक्ति जो हमारे साथ नहीं रह रहा है आ जाए तो उसको प्रणाम करना चाहिए। और ये दूसरी बात है, आपके घर में आए तब, अब गली में जाता हो तो बस मन से कर लेना ठीक है, रोड भी साफ नहीं होते हैं, उधर प्रणाम करना उचित नहीं, उधर मन से कर लेना चाहिए। सुबह करना है, घर में आए तो करना चाहिए, वो घर में आए की बात थी। मेरे हमारे सिचुएशन से हम बाहर से आए, हम 3-4 दिन बाहर प्रचार की सेवा में गए थे, तो आज दोपहर को 11-12 बजे आए। अब हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं मंदिर में सारे लोग, वो तो आप सुबह मंगल आरती में सबको वांछा कल्प कर गए ना, आप दोबारा काय के लिए करना? मंगल आरती नहीं आया, बाहर से आया, मंगल आरती में नहीं आया, हाँ। बाहर से आया 10 बजे या 11 बजे, तभी 4 दिन बाद बाहर आए, बाहर से मंदिर आए। 4 दिन बाद में आए तो भी रोज सुबह वांछा कल्पत्रु जहां भी हो कर दिया कर। मैं तो रोज सुबह वांछा कल्पत्रु करके जितने भक्त कम से कम मुझे सहायता की है जो भक्ति में, या जो मेरे मार्गदर्शन रहे थे, उन सबको पहले सुबह प्रणाम करके, लिस्ट है कोई 101 भक्तों की, सुबह ही प्रणाम कर देता हूँ, मिले ना मिले उसमें आ जाते। प्रणाम कर लेना चाहिए, और हर जगह गिरना भी ठीक नहीं है, जहाँ आए गिरता रहे, आदर से प्रणाम कर लेना चाहिए, मन से आदर देना चाहिए। घर में आए तो उधर है, घर में आए तो ऐसे घूमते फिरते नहीं। चलो अब इस पढ़ाने को पूरा किया, बहुत हो गया, टाइम 3 भी बज गए, हमको जाना भी है। हरे कृष्णा। आपका क्या प्रश्न है भाई? ए उसके चक्कर में क्यों पड़े, तुम्हें ऐसा काम करना है क्या? जो काम करना ही नहीं है उसकी बात क्यों करते हो भाई? ब्रह्मा के ऊपर आरोप ही नहीं लगा तो आपको क्या परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी आपको नहीं। वाक का इंसिडेंट किसी ब्रह्मा के दिन में या किसी और ब्रह्मा के समय हुआ था, लेकिन उसको भी भगवान ने बुरा नहीं माना, वो भी सबको शिक्षा देने के लिए था। और वो भी ब्रह्मा ने किया कुछ नहीं, सिर्फ एक्शन मतलब एक विचार आया और भागा, लेकिन उसके द्वारा कोई अपराध नहीं हुआ। विचार के अपराध के लिए भी उसने शरीर त्याग दिया। क्या डिफरेंस है? अलग पर्सनालिटी, एक ही पर्सनालिटी। ब्रह्मा कहते
देखो ब्रह्मा, इसमें हम जो पढ़ रहे हैं वो ये दिख रहा है कि जब से चतुर्श्लोकी पढ़ा सुखा है उसके बाद नहीं किया है, उससे पहले वाले ब्रह्मा की बात है। और चतुर्श्लोकी तो पहले दिन ब्रह्मा को मिली है जब उसका जन्म हुआ है, इसका मतलब इससे पहले वाले ब्रह्मा की बात है। नहीं नहीं, वाक और सरस्वती की भेद पूछ रहे थे। और वाक और सरस्वती का भेद हाँ, दोनों एक ही है, दो अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। मेरे ख्याल में वाक के लिए प्रभुपाद ने सरस्वती शब्द लिखा है, जो परपट में वाक वाले में सरस्वती शब्द प्रभुपाद ने लिखा है। बहुत सारे लोग बाहर बोलते हैं कि वो वाइफ फैमिली ब्रह्मा जी की वाइफ है। नहीं तो क्या, किसमें क्या हुआ, सरस्वती वाइफ हो गई तो वाक के रूप में प्रकट नहीं हो सकती क्या? वाक का मतलब है वाणी, और वाणी की अधिष्ठात्री देवती है जो देवी है सरस्वती। तो मेरे को तो सबके दिमाग में वही वाक घूम रही है अभी तक, वाक की देवी। एनीवे बहुत कुछ है, इतने में पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन हमने ज़बरदस्ती इसको पूरा कर लिया है।